अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये तरीका वारदात रहा है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को कहते हैं कि खुलकर तुम हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाओ, ऐसी ऐसी बातें करो जिनसे ये आपस में भड़कें। ऐसा ही कुछ किया गया नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन है उनके जरिए। इस औरत ने बतौर नेशनल स्पोक पर्सन टीवी पर आकर इंतहाई गलत और बदतमीजाना लहजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कुछ भी कहा, उसको सुनने के बाद हर मुसलमान के जज्बात भड़क उठे, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। हम उन्हें अपना आखिरी नबी मानते हैं जिनके बारे में कोई भी गलत या बदतमीजाना लहजा काबिल कबूल नहीं। अगर यही सवालात नुपुर शर्मा एक मुहज्जिब तरीके से पूछती तो उन्हें इन सवालात का बेहतरीन दलाइल के जरिए जवाब दिया जाता, जिसके बाद उनकी गलतफहमी दूर भी हो जाती। लेकिन नुपुर का मकसद यहाँ सवाल करना नहीं बल्कि मुसलमानों को भड़काना था। इसके लिए उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाई और अपने अंदर की जहालत उगली, जिसके बाद सबसे पहले ये मामला हिंदुस्तान में उठाया गया जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जब ये मामला आर्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने हाईलाइट किया कि किस तरह एक सरकारी स्पोक पर्सन नेशनल टीवी पर बैठकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगल रही है, तो उसके बाद से पूरी दुनिया से नुपुर शर्मा के इस बयान की सख्त मजम्मत की गई। अरब कंट्रीज में काफी देर तक ट्विटर पर ये गुस्ताखी का मामला नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा, जिसके बाद अरब ममालिक में तमाम किस्म की इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। जितने भी हिंदू वहाँ नौकरी करते थे उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी गई और सरकारी सतह पर इंडिया पर जोर डाला गया कि वो माफी मांगे। सबसे पहले कतर, उसके बाद कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन और अफगानिस्तान ने सरकारी सतह पर इंडिया पर जोर डाला, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर माफी मांगी और नुपुर शर्मा को स्पोक पर्सन के ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन नाजरीन, क्या सिर्फ नेशनल स्पोक पर्सन को सस्पेंड कर देना काफी है? जबकि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया में कोई भी ऐसी आलतू फालतू बात करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए हमारी भी यही दरख्वास्त है कि नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स, इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। देखिए, जो भी मैंने अपनी डिबेट पे कोट किया था वो मैंने एक धर्म के रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोट किया था। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया करके कोई लर्नेड क्लेरिक आए, कोई लर्नेड मौलवी जिनको पता है, इस्लामिक स्कॉलर आए और मेरी बात को गलत ठहरा दे कि ये फैक्चुअली स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और मेरी परिवारजनों की मतलब अब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आए जा रही हैं। और ये मौलाना लोग जो महराज का जिक्र करते हो क्या है? कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते हैं। कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं? और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे और ये फलक और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद और ये धरती। इसे कहते बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कांत रत्कम तकनाहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व ताला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आयत थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है। अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में,
وہ ارد بعد ذالک دہاہا, اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کی شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے, اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہاہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ جیوسفیریکل ہے, مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا, اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے, خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے, شتل مرغ آسٹرچ, اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ, وہ بالکل دنیا کی طرح ہے, گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں, جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے, ابھی کچھ چند عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتا چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے, یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے, وہ بوروڈ ہے, کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے, چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئے, اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. 20% ایمبیگوس ہے, ہمیں نہیں پتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتا ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتا نہیں, تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا, یہ بھی قبول کریں گے جن ہے, فرشتے ہے, جہنم ہے, دوزخ ہے. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A few days before there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19 not 9. Can you just throw some light on that? Sisters asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah, it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that hadith of the verse of the Quran. So based on this again,
what I believe that the hadith is authentic, and even the age of 6 and 9 is authentic, and how to justify that. When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s, we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15. In America, it's about 12 to 13. And the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. Today, medical science tells us that closer to the equator, the age of puberty is earlier. This is one point of it. And today, after science advance, we have come to know that because of the change in the atmosphere and the surrounding and the diet itself, today in America, as well as in India, there are cases in which there are sisters, mashallah, girls, at the age of 10, they reach puberty. They start having menstrual cycle. And today medical science tells us that if any lady starts the menstrual cycle, at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. Though the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. So based on this scientific fact that we have come to know today, according to the Islamic Sharia, moment a lady reaches puberty and a gent reaches puberty, they can marry. Every country has its own law. For example, the law of India is that when a girl reaches the age of 18, they can marry. The law in USA is at the age of 16. The law in Indonesia is 19. So for example, if a couple get married in America who are of the age of 16, so in America it's legal, but in India it's illegal. Now why has India chosen 18 and America chosen 16, we don't know. And there is a state in America called Texas, where coming down generations, that it's common to marry early. So therefore in Texas state alone, even if the girl or the boy, they are of the age of 14, they can marry, it's legal. So there's a separate law for Texas because that's the society. So at the age of 14, if a girl or boy living in Texas marries, it's legal. What's illegal in India is legal in America. What is legal in India is illegal in Indonesia or Malaysia. So what we realize that everyone has his own criteria. As far as the Islamic criteria is concerned, I told you that once a girl or a boy reach the age of puberty, when they get matured, they can marry. So based on this, alhamdulillah, what we realize, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was unique. And when we read the life history of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was very intelligent, she was very matured, and alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad. There are some people who say that fine, she could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars. If she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. So because she was intelligent, she was matured enough, alhamdulillah, I feel medically and scientifically and Islamically, a marriage consummated at the age of 9 once a lady is